like how to become product manager and like what does product manager doesn't do. So this is very important. Like once you read about the product management in detail, so you will come to the conclusion that a product manager he does not write the codes. So these are the things which he do, and what he doesn't do, we also that also we will try to understand first. So this is the product manager and how he functions in a particular organization. So he is responsible for defining the market and the customer. So for example, you can take the example of any product. Let us take the example of Zomato, Swiggy, which are into the food tech space. So the product manager is responsible for defining the TG, that is the target group in the marketing terms, and also the what will be their customers. Apart from that, they are responsible for the competitors' products and capabilities. So if I am working as a product manager in Zomato, so I should be well aware about the product Swiggy. I should be well aware about the different competitors into the food tech industry. And similarly, define the requirements in the roadmap. Also, the product manager is responsible for the internal stakeholder communication, and he is responsible for the launch timing. See, when you are working as a product manager, you must be well aware about when should you launch the product. That is very much important. So this is the diagram you can see, and where does the product manager lies. So you might have seen this diagram on Google or any other websites also. So this is the place where does the product manager lies. So he's the intersection between the UI UX, that is the user interface and the user interface, and this is the technology team, and this is a business team. So user experience and user interface is very much important when you see the product. So you can take the example of the fintech products now. So when I say about the fintech products, let us take the example of Unicards and Slice. So have you ever used Slice and Unicards? Any one of you, if you know these products? Yes, sir. Many of us have used Slice in the college, marketed by. Right, fine. So basically, if you see Slice and compare with its competitor, see what is the business model of Slice. Whatever the credit you take for 1 month, it is being sliced into 1/3 every month, and you don't have to pay any interest for the next 3 months. And similarly is for the Unicards, but you try to understand what is the difference between both. So the product manager of Slice will try to see what are the offerings which are being offered by Unicards. This is the business segment, this is the tech, and this is the UI UX. Excuse me, sir. Yeah. Sir, do every type of product manager interacts with all three circles like UX, tech and business? Like I meant to say that कि this is a API product manager होता है, FMCG हो गया, तो ऐसे different type of product manager सभी लोग interact करते हैं, या जो सिर्फ tech product manager like either software or API product manager they will interact with the tech and UX? So definitely, if you like talk about the industry, if you talk about the organization, so product manager is responsible for interacting with each and every team. So I will quote some examples in the at the end of the slide. So how does the product manager interacts also? That is very much important. So he interacts with all the teams. See, product manager is basically the bridge between the tech team and business team. आप जैसे एक आइडिया लो, मतलब एग्जांपल ले लो कि जोमेटो का कोई एक जोमेटो की सेल्स टीम है, कस्टमर सक्सेस टीम होती है, एक जो कस्टमर सपोर्ट टीम होती है. सो बेसिकली they get a response from the customer कि they are facing some problems in ordering the food. They want certain button here, they want certain drop down list here. So there are some features which are being recommended by the users to the sales team. अब sales team directly tech team को नहीं बोलेगी कि यार customer की एक problem है, तुम उनको solve कर दो. That is not feasible in the organization. आप सोचो कि आप developer हो एक, you are a software engineer working in some organization, and कभी तुम्हें marketing team से requirement आ रही है, कभी तुम्हें sales teams आ रही है, कभी customer success आ रही है. You may also get the request from the finance team also. So that would be very hard for the technical team to cater to the request of all the teams. तो होता क्या है, product manager comes into the between. तो जो भी सारी teams होगी, they will go to the product managers. प्रोडक्ट मैनेजर देखेगा कि ये UI UX की रिक्वायरमेंट है, ये मार्केटिंग की रिक्वायरमेंट है, ये सेल्स की रिक्वायरमेंट है. प्रोडक्ट मैनेजर देन विल प्रायोरिटाइज द इश्यूज. अब ये नहीं होगा कि सारे इश्यूज वन बाय वन करेगा, दैट डिपेंड्स ऑन द प्रोडक्ट मैनेजर, कौन सा इश्यू वो पहले सॉल्व करेगा.
and then accordingly all these issues are transferred to the technical team, software engineer team. Now again, these are the do's for the product manager. Again, the same thing. They negotiate the disagreements and maintain the progress, and they develop the consensus on the team factions. Disagree but commit. See, consensus is very much important. You have to disagree from various stakeholders. अब होता क्या है कि प्रोडक्ट मैनेजर दे विल स्टडी द यूजर्स, दे विल कम कि यार दीज आर द प्रोडक्ट फीचर्स दैट नीड टू बी इनकॉर्पोरेटेड, बट फाइनेंस टीम आ जाती है बीच में. दे विल से we don't have the budget to release these product features, we don't have the budget to hire new employees into our company, we don't have budget to, there are many restrictions. What I want to say is, apart from that, there can be the lack of resources also. So this is the duty of a product manager to develop a consensus among all the members of the organization. एक scrum meeting होती है, just I'm giving you a basic idea how does a product manager works. So there is a scrum meeting. So scrum meeting consists of development head or the engineering head of the company, the QA head and the product head. So these people involves the scrum meeting and they decide like what should be the roadmap for the product. Okay. These are the don'ts for the product manager. So don't try to build what you think is right. And this is very much important. Every one of you who want to aspire for the product management, so this is very much important. In the interviews also, it may be asked to you how you develop a product. So don't try to build the product what you think is right. मुझे लग रहा है कि यार ये बटन ऊपर होना चाहिए, ये बटन यहाँ नीचे होना चाहिए, या मैं कस्टमर का जो लॉगिन एक्सपीरियंस है मैं उस टाइप का दिखाना चाहता हूँ. So this is all rubbish. What you think is rubbish, what your customer think, what your user think is right. So always advocate for your users. Second is, don't expect that the team will execute the orders blindly. Okay. And don't forget where the credit is always due. So in the nutshell, what I want to say is, put yourselves in the shoes of users and from their perspective, think of the product. Now let us start with a case study now. Previously I have given you a lots of information about the product management. So there is a case that I have just solved, and I will give you the solution, how the end-to-end solution. So, have you used HealthifyMe? Any one of you? HealthifyMe is a startup. It's a very good company based in Bangalore. They also offer the product manager roles. Any one of you want to do internships or are looking for the full-time offers in the HealthifyMe, there are lots of openings for APMs, product analysts, product managers. You can look out of that. Now, what I'm going to tell you in the next 5 minutes is what exactly the product manager do, by giving you a live example, right? So just see first of all, what does a product manager do? What I have told you, they solve the problems. Okay, so this is a problem statement. Hope everyone is able to read it. So problem statement is, when I want to lose weight and be fit but can't follow a prescribed health diet plan due to my other commitments, help me to follow it consistently without any hassle, so I can be confident and focus more on my career and personal life. So this is a user persona. This is a lady who is 28 years of age, lives in Bangalore. She's an associate manager. She spends 10 to 11 hours in the office, eat healthy foods at home, and goes to the gym for a run and when has the time. What are the wants and needs of this particular user? She wants to lose weight, be confident, have a healthy lifestyle. What are her pain points or frustrations? Following the diet plan provided by the instructor, eating unhealthy and less food when out of home due to limited choices. See, this is the problem that we are able to identify now, right? So once you get the problem statement, the next aim is to validate that problem. And how you validate that problem? You do user research. See, user research is very much important. How you conduct the user research? So there are two types of research when you talk about research methodology. One is primary research and another one is secondary research. What is primary research? Primary research is basically what you do by yourself, by taking Google Forms, by type forms. So these are the primary research. What is secondary research? Secondary research is basically what you do from the already available data. Okay. So this is the age group and this is the gender. So you can see
82% of the people lies from 26 to 30, and male is 63 and female is 37%. That city, if we talk about the city, so we have the tier 1 city, 97%. Okay. So this is the 86.5% of the user who want to lose weight to be fit, and 68.2% of the people are the users who claim to have tried to be on a diet, but they have failed. Okay. Now we have to deep dive into the problem. So 97% claim not having time to follow as a primary goal is to focus on the career and the personal life. So they are saying their primary goal of their life is to focus on their career and personal life. That's why they are not able to follow their diet. And 88% of the people, they have claiming the high frequency of meals, like 6 to 7 different times of the day, to be issue. So this is the issue that you can see on the screen. Now, why now? See, the product manager has to answer two questions basically. Why you want to solve the problem? कि मैं उस problem को solve करना क्यों चाह रहा हूँ? See, every problem cannot be solved. Like there are infinite number of problems which the product manager get from the different stakeholders. But then the product manager has to answer why that particular problem to be solved. अब इसका आंसर कैसे मिलता है? Why that particular problem to be solved? इसका आंसर मिलता है डेटा से, कि जो मेरे पास प्रीवियस डेटा है या प्राइमरी रिसर्च है या सेकेंडरी रिसर्च है, इस प्रॉब्लम को सॉल्व क्यों करना चाहता हूं मैं. सेकेंड क्वेश्चन दैट द प्रोडक्ट मैनेजर हैज टू आंसर इज व्हाई नाउ. अभी क्यों सॉल्व करना चाहता हूं? व्हाई आफ्टर 1 साल बाद या 2 साल बाद क्यों नहीं? अभी व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट. सो यू कैन सी लाइक व्हाट इज द आंसर ऑफ व्हाई नाउ दैट आई हैव डिपिक्टेड. 44% and 33.8% of the urban women and men respectively in India are either overweight or obese. And during lockdown, overall BMI and obesity rose to 22.1 kilogram per meter square and 24.6 respectively. Now 5 out of 10 urban Indians are trying to lose weight, and 80% of the people are not successful at keeping their weight off over the long term. So this is the answer of why now. And see, this is the business value of HealthifyMe. So what is the HealthifyMe's philosophy is your health depends upon 80% of your diet and 20% of your workout. Okay. Now if we solve this problem, मतलब कि जो डाइट मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं, तो उससे होगा क्या? हाउ द बिजनेस इज अफेक्टेड. नाउ द बिजनेस विल इंक्रीज इन द न्यू यूजर एक्विजिशन. देयर विल बी अ इंक्रीज इन द यूजर एक्विजिशन, improve in the user engagement, increase in the conversion rate, increase in the retention rate, and increase in the user retention on the platform. Are you guys comfortable with these terms? मतलब ये मार्केटिंग की टर्म्स होती है. मतलब any one of you who have idea of these terms? सर रिटेंशन रेट का नहीं पता, बाकी समझ आ गया. रिटेंशन रेट क्या होती है? मतलब सिंपल है, मतलब यू कैन रिटेंशन रेट एवरी फील्ड में होती है. एचआर में भी रिटेंशन रेट होती है. अब रिटेंशन रेट मैं तुम्हें जोमेटो की बताता हूँ कैसे कैलकुलेट करते हो. जोमेटो का ऐप तुमने डाउनलोड किया प्ले स्टोर से, राइट? अब प्ले स्टोर पे 2 ऑप्शन, मतलब अगर एप्पल का है तो यू गो टू द डिफरेंट, मतलब उस पे ऐप स्टोर पे. फॉर एंड्रॉइड यू गो टू द प्ले स्टोर, राइट? अब 100 मान के चलता हूँ, देयर आर 100 पीपल और 100 पीपल हु हैव डाउनलोडेड जोमेटो ऐप फ्रॉम प्ले स्टोर. अब क्या जितनों ने भी 100 ने डाउनलोड किया, क्या सब लॉगिन करते हैं? नो. देयर आर सर्टेन सेट ऑफ यूजर्स व्हिच गेट ड्रॉप्ड ऑफ. ड्रॉप्ड ऑफ टर्म इज वेरी मच इंपॉर्टेंट व्हेन यू आर जस्ट टॉकिंग अबाउट प्रोडक्ट मैनेजमेंट. कि 100 यूजर्स ने जिन्होंने डाउनलोड किया है जोमेटो का ऐप, उसमें से 80 साइन इन करते हैं, 20 ड्रॉप ऑफ हो जाते हैं. ड्रॉप ऑफ के देयर कैन बी वेराइटी ऑफ रीजंस कि मैं ड्रॉप ऑफ क्यों हुआ. रीजंस बता देता हूं तुम्हें जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग. फॉर एग्जांपल, मैं जोमेटो की लॉगिन स्क्रीन पे आया, मुझे पासवर्ड नहीं पता था. अब तो चलो चेंज हो गया, लॉगिन वाया ओटीपी हो गया. बट 5 years इफ यू सी जोमेटो ऐप, people used to drop off from Zomato login screen just because they don't know the password, and they were too lazy to create a new password, enter that new password again. वो मेल पे एक लिंक आएगा, उस लिंक पे क्लिक करके वापस से Zomato पे डायरेक्ट होगा. So they were too lazy to do that. So 20% of the people or 20 people have dropped off. ठीक है. अब Zomato पे आ गए तुम, you are on the home page of Zomato. I added some food from some restaurants into my cart. Okay. अब कार्ट में ऐड करने के बाद भी there are certain set of people who again drop off. What is the reason for drop off now? Any one of you who want to answer? Like कार्ट में मैं Zomato में कार्ट में मैंने फूड ऐड कर चुका हूँ, उसके बाद भी मैं ड्रॉप ऑफ हो रहा हूँ. There are many reasons. Any मतलब reason you can मतलब just try to answer the reasons. The user might not be interested in that food. Restaurant may be very far away from their house.
ठीक है, ठीक है, time and delivery charges. टाइम एंड डिलीवरी चार्जेस, राइट, ठीक है, मतलब दीज आर लाइक करेक्ट आंसर्स। तो होता क्या है, मैंने फूड ऐड कर लिया जोमेटो की कार्ट पे, देयर कैन बी मेनी रीजंस कि मैंने अब स्विगी पे देखा यार हल्दीराम से मैं ऑर्डर कर रहा हूँ, स्विगी पे देखा हल्दीराम्स का वहां पर रेट कम आ रही है, सो ये होता है कि कॉम्पिटिटर प्राइसिंग इज लेस, तो द रीजन स्टेटमेंट इज कॉम्पिटिटर प्राइसिंग इज लेस, तो मैं ड्रॉप ऑफ हो जाता हूँ और स्विगी पे चले जाता हूँ। अनदर रीजन, अब ठीक है जोमेटो पे ऐड भी कर लिया मैंने, ऐड करने के बाद कहां पर जाते हो आप, पेमेंट गेटवे पे, ठीक है, पेमेंट गेटवे पे भी there are certain set of users which again drop off. Any reasons why people drop off on payment gateway? No COD. ठीक है, no COD. Other reasons? Offers. Maybe the payment method is loading slowly or not working. Yeah, this is also a right reason. Okay. Less coupon codes available, like finding coupon codes. Yeah, मतलब variety of reasons होते हैं, कस्टमर की फिलोसफी भी डिपेंड करता है सारा, मतलब what the customer psychology is। अब होता क्या है, फॉर एग्जांपल मेरे को देखा क्रेडिट कार्ड का ऑप्शन है वहां पर पेमेंट गेटवे पे, एंड व्हाट आई थिंक इज कि क्रेडिट कार्ड के लिए क्या चाहिए होता है आजकल, तो क्या है क्रेडिट, मतलब तुमने जोमेटो का अगर अभी रिसेंट अपडेट देखा होगा, यू कैन स्कैन द क्रेडिट कार्ड, जो तुम्हारा फिजिकल क्रेडिट कार्ड है, यू कैन स्कैन इट, यू डोंट हैव टू एंटर द 16 डिजिट वीजा नंबर, फिर सीवीवी नंबर, उसकी कोई जरूरत नहीं होती। अब that's 3 years down, मतलब in the 2017-18 you have to enter all the 16 digits. People were too, मतलब I am just telling from the data that I have just studied, people were too lazy to enter the credit card numbers, yeah, people were too lazy to enter, link their UPIs, so there are a variety of reasons why people drop off। okay, so this, जो मैंने तुम्हें पूरा बताया ना, this is known as funnel। funnel देखा कैसे होता है, just a conical funnel। So there were 100 users which were coming from the Play Store, then 80 users came into Zomato, then finally there are around 20 people जिन्होंने finally buy किया। So this is the 20% which is the business value। And now you were asking about the retention rate। अब retention rate क्या होती है कि एक customer acquired कब होता है, customer acquisition बोलता हूँ मैं कि जब customer ने they have downloaded the app and they have signed in into the app, this is known as customer acquisition। okay, अब जब कस्टमर डाउनलोड करने के बाद यू जस्ट अनइंस्टॉल योर ऐप फ्रॉम योर मोबाइल फोन, आपने देखा होगा यू रिसीव अ मैसेज व्हाई यू हैव, मतलब कि वाज देयर एनी प्रॉब्लम, मतलब एक फनी सा मैसेज आता है जोमेटो से ऑन योर ईमेल आल्सो, ऑन योर एसएमएस आल्सो, कि वी आर वेरी सैड कि यू हैव अनइंस्टॉल्ड योर एप्लीकेशन, अनइंस्टॉल्ड आवर एप्लीकेशन, समथिंग लाइक दैट। सो दिस इज द मैसेज व्हिच इज यूज्ड टू रिड्यूस द रिटेंशन, मतलब व्हिच इज यूज्ड टू इंक्रीज द रिटेंशन रेट, क्योंकि वो कस्टमर ने, मतलब रिटेंशन क्या होता है, रिटेंशन इज टू, जो एक्वायर कस्टमर होता है उसको रिटेन करना, उसको अपने पास रखना, दैट इज नोन एज रिटेंशन। ओके, तो दीज आर द फनी मैसेजेस। आप जोमेटो पे देखते हो, तुम फूड कार्ट में ऐड कर लेते हो, ठीक है, पेमेंट नहीं करते, तो तुमने कभी देखा कि एसएमएस आता है कि योर फूड इज वेटिंग इन योर, मतलब एक विटी सा या फनी सा एसएमएस आता है जोमेटो से, पुश नोटिफिकेशंस बोलते हैं उनको। एनी वन ऑफ यू मतलब हु हैव ऑब्जर्व्ड दिस? Definitely. Sir, it also comes in recharge apps like Airtel and Jio. सब में आता है, मतलब ये अभी चलने लगा है पुश नोटिफिकेशंस का लास्ट 3 to 4 ईयर से। तुम मतलब कोई भी ई कॉमर्स वेबसाइट ले लो, अमेजोन ले लो, फ्लिपकार्ट ले लो, कार्ट में ऐड करके रख दो तुम अपने जो आइटम्स जो तुम्हें खरीदने हैं, और तुम पेमेंट नहीं करते ना, दे विल गेट, मतलब यू विल गेट अ नोटिफिकेशन, मतलब फनी सा नोटिफिकेशन आएगा, वी आर वेटिंग टू पे, समथिंग लाइक दैट। सो दीज आर जस्ट टू इंक्रीज द फनल वैल्यू, जितने भी कस्टमर फनल में आए हैं एटलीस्ट दे आर प्रोवाइडिंग सम वैल्यू टू द बिजनेस। ओके, सो जस्ट कमिंग अगेन टू HealthifyMe एग्जांपल। So these are the 3 solutions that I have suggested for HealthifyMe, मतलब अभी है नहीं ये HealthifyMe में। So this is HealthifyMe Grocery, one is HealthifyMe Diet Right and one is HealthifyMe Habit। अब HealthifyMe Grocery पे क्या होता है? So Grocery में क्या होता है, मतलब you will see they can be prepared at home based on the grocery food items and ingredients availability। So, अभी HealthifyMe में क्या होता है, HealthifyMe recommends food कि you should eat, मतलब मेथी पराठा in the morning, you should take 1 glass of milk, something like that, entire day की, मतलब they tell you entire meal journey। But HealthifyMe Grocery, what it will do is the app will provide recommendation based on appetite, taste, diet goals। So this is how, मतलब it can serve our business goal। Second thing is HealthifyMe Diet Right। So it provide end-to-end solutions for personalized diet plans, and this is HealthifyMe Habit। So users can build a habit of sticking to a diet for a long-term basis।
it helps user to build new habits around the diet. So these are the 3 things: habit tracker, this you can see here. Okay, so this is how the value and effort. So you have, after you make new product features, no, you have to give the value and efforts to that particular business innovation that you have brought into the product, कि उसमें value कितनी जा रही है, उसमें efforts कितने जा रहे हैं. So at the end of my guest lecture, I will just share this PPT with you. You can just read this PPT. मतलब this is very good and मतलब you will get a lots and lots of idea. अभी HealthifyMe में क्या होता है कि है ना, मतलब what the solution I have proposed is कि link HealthifyMe to the delivery partners like Swiggy, Zomato. So for example, if my diet says in the meal time I should have dal, roti and rice. So if I am in office and not able to get that diet, so I can just link HealthifyMe to Swiggy and Zomato and I can get my food. So these are the proposed solutions. I just want to share some books for the product managers. Like you should have these books. You should read these books. You can find in LNMIIT library also. These are readily available. So one is this token economy. So Web3 technology is very much important now. Even the product managers who are aspiring product managers, they must learn Web3 because the future is Web3 now. Future is like machine learning implemented with the Web3. So you can learn all these blockchain and token economy. Next is for aspiring PMs is the cracking the PM interview. So if you are in 3rd and 4th year, so I would recommend this book, Cracking the PM Interview. I am not recommending you to buy this. You can just, these are readily available in the soft copy online. You can just note down the name of these books. And this is Decode and Conquer by Lewis. And this is Measure What Matters. And that is very much important book for like measuring the KPIs. So KPIs is like key performance indicators. So every product manager has certain KPIs that he has to measure. So this is a nice book, and this is Outcomes Over Output. Again, the book for measuring the metrics. So any one of you can recommend. And another book is Continuous Discovery Habits by Teresa Torres, and this is Sprint by Jake Knapp. So these are for the user needs and all. Books for the user stories, features and roadmaps. So this is nice book. User story mapping by Jeff Patton, and this is product roadmaps by Jana Basto. And these are certain books. You can just take 2 to 3 books and you can just start your journey of product management. Okay. So I will be exploring the lab test booking of Tata 1mg. So this is the particular product feature that I am looking upon. See, product manager जो होता है ना, वो पूरा product is very big thing. But अगर तुमने बोला कि HealthifyMe है, so HealthifyMe is in itself is a very big product. So product manager just break down the product into many small chunks, and then he study each and every small chunk in detail. So this is the function of the product management. आप अभी जाना, after the guest lecture you just download some apps and try to study those apps. एक मैं एग्जांपल है ना Zomato का देता हूँ तुम्हें, you will try to relate that. Zomato अगर 5 साल पहले यूज किया होगा तुमने, तो उसमें क्या होता था? अगर तुम पासवर्ड फॉरगेट कर जाते हो तो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू क्रिएट न्यू पासवर्ड, एंटर दैट पासवर्ड अगेन. वो तुम्हारी ईमेल पे लिंक आती थी. सो द यूजर हैज टू डिवोट एटलीस्ट 4 to 5 मिनट्स Zomato के ऐप में अंदर आने के बाद, अंदर आने के लिए डाउनलोड करने के बाद, इफ ही हैज टू गो टू द Zomato ऐप, ही हैज टू डिवोट 4 to 5 मिनट्स. आज क्या होता है, मैंने ऐप प्ले स्टोर से Zomato का ऐप डाउनलोड किया, आई जस्ट हैव टू एंटर माई मोबाइल नंबर का जो ओटीपी भी आता है वो होता है ऑटोफिल कोड्स. अब तो क्या है, तुम्हें ओटीपी भी एंटर नहीं करना पड़ता, तो 6 डिजिट का ओटीपी होता है वो भी एंटर नहीं करना पड़ता. सो एम आई मेकिंग सेंस? ये तुमने रिलेट किया है पहले, एनी वन ऑफ यू? यस सर. तो ये जो Zomato का जो प्रोडक्ट, ये जो फीचर है, सो दिस इज द वर्क व्हिच इज डन बाय द प्रोडक्ट मैनेजर. जो Zomato का प्रोडक्ट मैनेजर होता है उसके दिमाग में ये चल रहा होता है, हाउ कैन आई इम्प्रूव द यूजर एक्सपीरियंस. जो मेरा यूजर का एक्सपीरियंस है उसको मैं इंप्रूव कैसे कर सकता हूँ. पहले मुझे सारा पासवर्ड डालना पड़ता था, क्रिएट न्यू पासवर्ड, एंटर दैट पासवर्ड अगेन. अब क्या होता है, लॉगिन वाया ओटीपी, सिंपल लॉगिन करूंगा, विद इन 1 second आई विल बी इनटू द Zomato ऐप. सो दिस इज द थिंग ऑफ द वर्क दैट इज डन बाय द प्रोडक्ट मैनेजर. नाउ जस्ट fastly we go to the Tata 1mg now. So this Tata 1mg, I'm looking for the lab test. Now I will be exploring that how online lab test booking experiences in the Tata 1mg. Okay.
So this is the user flow. See, you open the app, you go to the lab test, you either book on a call, just you call the helpline number, you search the test package, you explore it. When you search a test package, you enter the individual test. You after entering the individual test, you add to the cart. Okay, cart में add करने के बाद you open the cart and then you go to the add patient and checkout. When you book a call, you directly go to the checkout. So this is known as user journey or user flow. ये सारा काम होता है प्रोडक्ट मैनेजर का, कोई भी ऐप का यूजर फ्लो कैसे बनाते हैं. ओके, नाउ metrics considered in this Tata 1mg is customer conversion rate, average order value, customer lifetime value, cart abandonment rate and order cancellation ratio. ये जो मैंने अभी तुम्हें 10-15 मिनट पहले जोमेटो के एग्जांपल में समझाया था, सारी चीज वही सेम चीज है. अबेंडमेंट रेट क्या होती है, वही सेम चीज होती है. मैंने कार्ट में ऐड कर लिया और फिर मतलब ऐप को क्लोज कर दिया या मैंने पेमेंट नहीं किया, इसको बोलते हैं कार्ट अबेंडमेंट रेट. एवरेज ऑर्डर वैल्यू क्या होती है, एवरेज ऑर्डर वैल्यू इज बेसिकली कि एक पर्टिकुलर, जैसे मैं कस्टमर हूँ एक फॉर एग्जांपल जोमेटो का, मैं पर डे फॉर एग्जांपल 200 रुपीज का ऑर्डर करता हूँ जोमेटो से. और लाइक इफ आई एम टेकिंग द एग्जांपल ऑफ 500 पीपल, मतलब रफली इन राजस्थान, तो मैं बोल सकता हूँ कि इन राजस्थान द एवरेज ऑर्डर वैल्यू ऑफ जोमेटो पर पर्सन पर डे इट इज 500 रुपीज. सो ये होती है ऑर्डर वैल्यू, कितना ऑर्डर कर रहा हूँ मैं पर डे के हिसाब से, या मतलब वट एवर द मेट्रिक्स भी. ओके, नाउ पेन पॉइंट क्या है अभी लैब टेस्ट में. तुम ये मतलब व्हाट यू पीपल डू इज टाटा 1mg का आज ऐप डाउनलोड करना, यू ट्राई टू सी दिस, मतलब व्हाट आई हैव फिगर्ड इट आउट. नंबर पेन पॉइंट 1 इज सर्चिंग फॉर द टेस्ट. पेन पॉइंट क्या है, नाउ सर्चिंग फॉर द हार्ट शोज हार्ट रिलेटेड टेस्ट, बट it does not shows or mention here the 1mg test packages which are specifically designed for the heart patients. ठीक है, अब हार्ट पेशेंट्स के लिए देखो लिपिड प्रोफाइल टेस्ट आ रहा है, ट्रेडमिल टेस्ट आ रहा है, मतलब दीज आर नॉट इंपॉर्टेंट टेस्ट. ठीक है, अब इस वाले फीचर में देखो, एक तुम्हें लेफ्ट में दिख रहा होगा, एक तुम्हें राइट में दिख रहा होगा. अब राइट में जो चीज है वो है सजेस्टेड वन, शो सजेस्टेड पैकेजेस which will include those tests which user searches. Through this user will find more value for the money since a la carte is expensive than a package. So are you able to understand this? मतलब इन दोनों में डिफरेंस क्या है. दिस इज द एग्जिस्टिंग वन जो लेफ्ट में है रेड वाला, ग्रीन वाला जो है वो है प्रपोज्ड, मतलब बेसिकली आई हैव प्रपोज्ड इट कि क्या होना चाहिए इसमें. ठीक है, अब अगर ये ग्रीन वाला होगा, देखो प्रॉब्लम क्या था, पेन पॉइंट क्या था कि जब मैं हार्ट टेस्ट के लिए सर्च कर रहा था तो मेरे पास आई वाज गेटिंग n नंबर ऑफ रिजल्ट्स, n नंबर ऑफ टेस्ट व्हिच वर नॉट यूजफुल आल्सो. बट होना क्या चाहिए था, हार्ट अगर मैं सर्च करता हूँ कीवर्ड हार्ट, सो आई शुड गेट कि what possible test should be there. ओके, इससे मैट्रिक्स कौन से इफेक्ट होंगे, वन इज द एवरेज ऑर्डर वैल्यू एंड वन इज द कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू. जो तुमने कस्टमर को एक्वायर किया है, ही विल बी विद यू इफ यू गेट सच रिकमेंडेशंस. ठीक है, पेन पॉइंट 2 क्या था, सर्चिंग फॉर द टेस्ट. देखो, इट डज नॉट वांट्स द यूजर ऑन बुकिंग द डुप्लीकेट टेस्ट फॉर द सेम पेशेंट. कोलेस्ट्रॉल इज ऑलरेडी अ पार्ट ऑफ लिपिड प्रोफाइल, हिंस डुप्लीकेट टेस्ट. देखो अगर तुम्हें थोड़ा बायोलॉजी की अगर थोड़ी नॉलेज है, या मतलब यू शुड हैव दिस नॉलेज, लिपिड प्रोफाइल टेस्ट और कोलेस्ट्रॉल एलडीएल, दीज आर सेम टेस्ट. इनके जो रिजल्ट्स आते हैं ना वो सेम आते हैं. ठीक है, तो हो क्या रहा है, कस्टमर ने 2 टेस्ट बुक कर लिए इस केस में, एक लिपिड प्रोफाइल टेस्ट भी बुक कर लिया, उसको लगा कि लिपिड प्रोफाइल टेस्ट अलग होता है और कोलेस्ट्रॉल एलडीएल अलग होता है, बट द रिजल्ट इज सेम. दोनों का जो रिजल्ट आता है वो सेम आता है. तो होना क्या चाहिए, अगर मैं लिपिड प्रोफाइल टेस्ट और कोलेस्ट्रॉल एलडीएल को ऐड कर रहा हूं कार्ट में, तो आई शुड गेट अ वार्निंग, shows a warning that duplicate are occurring for number of tests. It clear any confusion which will be realized post checkout. ये तुम्हें समझ आ रहा है, मतलब are you getting this? Any one of you will just say yes, और मतलब I should. तो ये प्रोडक्ट मैनेजर का काम होता है टू आइडेंटिफाई दीज प्रॉब्लम्स. ये प्रॉब्लम ये मतलब अभी टाटा 1mg में कि मैं अगर लिपिड प्रोफाइल टेस्ट और कोलेस्ट्रॉल एलडीएल ऐड कर रहा हूँ तो वो मुझे कोई वार्निंग नहीं दे रहा. और होता क्या है, कस्टमर को बाद में पता चलता है यार ये तो सेम ही टेस्ट है, मैंने 450 रुपए तो लिपिड प्रोफाइल के दे दिए और 280 रुपए कोलेस्ट्रॉल के दे दिए. तो बाद में उनको पता लगता है यार मतलब दोनों टेस्ट तो सेम ही थे, मतलब दे लूज द वैल्यू फॉर द मनी. लेकिन अगर उनको वार्निंग मिल जाती टाटा 1mg के ऐप में, सो दैट वुड बी अ गुड थिंग. सो ऑर्डर इससे मैट्रिक्स कौन से इफेक्ट होंगे, जो ऑर्डर कैंसिलेशन रेशियो दैट विल बी डिक्रीज एंड कार्ट अबेंडमेंट रेट दैट विल बी डिक्रीज्ड. ठीक है, लास्ट पेन पॉइंट इज कार्ट कंफ्यूजन. So once the tests are added, there is no way to check the description of the inclusion of test or packages. ठीक है, अब देखो मैंने लिपिड प्रोफाइल ऐड करा, क्रिएटिन टेस्ट ऐड करा, कोलेस्ट्रॉल ऐड करा. ठीक है, अब हो क्या रहा है, मुझे ना इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही. मैंने ऐड तो कर लिए,
मतलब पहले इन्फॉर्मेशन थी, लेकिन जब मैंने कार्ट में ऐड करे ना, आई डोंट हैव एनी इन्फॉर्मेशन. व्हाट डज लिपिड प्रोफाइल मींस, व्हाट डज कोलेस्ट्रॉल एलडीएल मींस, एंड व्हाट डज क्रेटिन किनेस एमबी मींस. ठीक है. What are the recommendations now? On tapping the individual test in the cart, take the user back to the description page of the test. अगर मैं लिपिड प्रोफाइल पे क्लिक करूंगा तो आई विल गेट दिस पर्टिकुलर बॉक्स जिसमें लिपिड प्रोफाइल के बारे में आई विल गेट ईच एंड एवरी इन्फॉर्मेशन. ठीक है. सो दिस इज द थिंग which must the Tata 1mg must have. अब इससे क्या होगा? कस्टमर कन्वर्जन रेट दैट विल इंक्रीज, कार्ट अबेंडमेंट रेट दैट विल डिक्रीज, एंड ऑर्डर कैंसिलेशन रेशियो दैट विल डिक्रीज. ठीक है. So these are the things, मतलब just these are the problems that Tata 1mg was having, and being a product manager, I should solve these problems. So see, project manager is basically, see, if you talk about the product management, so product manager basically looks for a particular product. So he is a mini CEO of that product. He deals with the entire product, user journey of the product, roadmap of the product. Project manager is entirely different field. So basically what happens is you get a project in your organization. The project can consist of, for example, you have to launch that particular, project is entirely different. So in the project management, you take the example of, just I'll give the example of that. Yeah, Google. In Google and Microsoft, there are lots and lots of project managers. So the project managers work there only with the business segment. No technology is involved, no UI UX is involved. Only they work for the business. Their aim is to generate the revenue. Their aim is to generate the profit for the organization. But the product manager, they act as a middleman between the various stakeholders. So this is the major difference between the product management and the project management. Yeah, so he must have all the knowledge of all the various stakeholders. So I just tell you, in the Times Internet now, so I am working here as APM. Now I must have the knowledge of dev team also. Being a product manager, I must know कि जो particular product है उसमें क्या क्या चाहिए. Technology stack होता है एक particular. Technology stack में whether this particular product features that must be built on Java, उसका जो backend होगा, backend में languages कौन सी use होगी, database कैसे sync करेगा. Apart from that, each and everything I must know from the tech stack perspective. Now I must know each and everything from the UI UX perspective also. जो UI UX की basic terminologies होती है या basic चीजें होती है, I must know that also. So I must know how the sales and marketing functions. So the product manager must know each and everything. So it is similar to jack of all and king of none. So you must be jack of all the particular or various fields: tech, marketing, sales, each and everything. Number first is the MS Excel. मतलब I can bet here like 1600 students in the college. मतलब जो MS Excel है ना, मतलब I'm sure कि सबको MS Excel नहीं आता है. मतलब MS Excel मतलब जो तुम्हें 12th या 10th में आ जानी चाहिए थी, मतलब I am bit sure कि you don't know entire MS Excel. And this is the right time. So when you are in your undergraduate, you must know entire MS Excel. When I say about MS Excel, you must know VLOOKUP, HLOOKUP, pivot tables, each and everything. Just try, मतलब you must be data savvy, मतलब you must know how to play with the data. So this is the number one skill of the product manager. ठीक है. उसके अलावा there are certain set of things. Apart from that, you must have good communication skills. मतलब you must work on your communication skills because you are the middleman between the different stakeholders and you need to communicate every now and then. I tell you, like my work at Times Internet, out of 8 hours every day, I am involved, like 5 hours I am in the meetings. Online meetings, I just do 5 hours of online meetings daily with the different stakeholders. So your communication skills must be very much important when you want to become a product manager. Data is very much important. You must know the several tools like Power BI and Tableau. So just go through them, Power BI and Tableau. You must know how to run the Power BI and Tableau tools. Apart from that, there are certain wireframing tools. You know how to make the wireframes. So you just note down 2 tools. One is Figma and another one is Whimsical. You should know how to draw the customer roadmap and product roadmap using these tools. So these are the basic skill set of a product manager. MBA is not necessary for the product management. If you have a good skills, if you just have the good skills like communication skills, data analytical skills, and like after 1 year experience after the BTech, I don't know like whether in LNMIIT also I have seen many people, they are working in Mama Earth.
I know some from the Y17 and Y18, they are directly working as APM in like some of the e-commerce companies, and that is very good also. So it depends upon you, how much skill set you have, how much communication skills you have. Thank you, sir, for such an amazing session.